Hello, good evening, all of you. This side Akash Arora. You are watching my YouTube channel IT Concepts, right? So, 12th IP students. Yesterday I have discussed about series. What is series? How to create a series? Multiple methods. Practically, I have implemented all the things with you, right? Today we are going to discuss about series indexing, slicing, operations attribute. So it is highly recommended that you should go through my previous video if you have not gone through it, right? अगर आप लोगों ने previous video नहीं बैठा देखा है, you should just go through that video. Then you should continue this video so you are able to understand properly. So today my discussion topic is Pandas series indexing and slicing. What is the use of index? Why we are using index? This that we will discuss. What is index? Why we are using indexing in this, right? So we are going for this, right? So what is series? As we have discussed, it is like a 1D array. कुछ 1D array जैसा है, right? But in this there is a option of label indexing. Label indexing is there, right? So how indexing is used to access a data. Main utilization of indexing is to access a particular data or a group of data, right? If you have large data set, if you want to slice means you want to take up parts of data, right? So you can use slicing, and indexing used to get a particular data. So this is the use of indexing and slicing actually. So in series actually, suppose there is a series, elements are A, B, C, D. These are the index labels. Values are 1, 2, 3 and 4. So these are the indexes A, B, C, D through which we are able to access. These are the indexes through which we are able to access the value. We are able to access the value. Which value we are able to access? The particular data. That means 1, 2, 3, 4. These can be accessed through A, B, C, D. And yes, there is one index number also, that is 0, 1, 2 and 3. These are defaults. These are by default. So these are the index labels. These are the values and these are the index number we will use. Please try to understand. There are three things. First one is index label, which we have used when we are creating a series. Second is value, and third one is index number, that is by default. If we are not using index label, अगर आप index label का use नहीं कर रहे हैं, in that case it will use index numbers actually, which is started by 0 only, right? So this is what we call indexing actually. And what is slicing, that we will discuss later on. So what is indexing? Indexing means whatever index is given to a particular value. By default indexing are 0, 1, 2, 3, but as it is series, so label indexing can be done. A, B, C, D, any index you can provide, right? Next please. Next is, suppose we will discuss next is, yes, accessing data from series with index number. Accessing means you are going to access data with index number. किससे एक्सेस करने वाला हूं मैं? इंडेक्स नंबर से एक्सेस करने वाला हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस. सपोज आई हैव क्रिएटेड एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. कल आपको बताया गया था पीडी डॉट सीरीज. पीडी इज व्हाट? pandas. Import pandas as pd. We have already done pd dot series. Data equals to 20, 30, 40, 50.2 and 60. These are the data. So that means data is 20, 30, 40, 50.2 and 60. Very nice. Yes, one data is float, so whole data will be converted to 0.0, 0.0. That means in float it will convert. I have given the index number, that is nursery, then it will be LKG, then it will be HKG, then it will be first, and that it will be second. So these are the index labels and these are the data, right? So whenever I have to access the data with index number, again I am saying I am accessing with index number, because I have written print as, it will print whole series. It has been printed, that is okay. I have written as 0. 0 is nowhere mentioned. Labels are nursery, LKG, HKG, first and second. 0 is nowhere mentioned. That means here we are going to use the index number, default index number 0, 1, 2, 3 और 4. These are the index number. ये आपके index number हैं. ये क्या है? Basically index labels. These are the data. Again I am repeating actually. And these are the index number. So if I write a number, suppose if I write S0, that means I am working on index number. So S0 is what? Nursery. So data will be printed nursery, that is 20.0. Similarly, if I write -1, now what is -1? This is what we call negative indexing.
In list also there is a negative. Similarly, there is negative. That means if I go through the bottom to up, it will be -1, -2, -3, -4 and -5. This is called reverse indexing. So when I write s of -1, that means it will give you the last value, and the last value is 60 only. So the output is 60. Output will be 60.0. So this is how you can access the value of a series using index number. Again, I am repeating, index number, not index label, right? Now, how to access the data from index label? Labels are nursery, LKG, HKG, first and second. These are the labels, right? So, in through which label, suppose if I write S, if I write S, yes, wait, as nursery, right? So nursery, value of nursery is 20, so output will be 20. If I write as second, तो value of second associated with second, second जो label है उस पर कौन सी value आपका 60, the answer will be 60. तो here we are accessing the value using index label. इससे पहले किसका use किया था? Index number, that is 0, 1, 2, 3. Now we are using index label, right? Yes, please. So through index label. Now the topic is series slicing. What is this slicing? As I again already told you, if there is a large set of data, I want to get it out a single sort of data. अगर बहुत बड़ा data है उसमें से कुछ part आपको fetch करना है, that is called slicing, right? तो slicing भी basically two types से होंगे. First one with the index number and second one with index label, right? Now index number, suppose if I write print as, okay, that is series, okay, as 1 colon 3. Important thing when you are using index label number, sorry, the last index will not be included. Last index will not be, ये important रखिएगा प्लीज, जब भी आप इस पर काम करने वाले तो last value will not be included. Last index number, actually last index number value will not be included. कैसे होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ. Will not be included. This is how it will be done. Please, S1 colon 3. 1 is what? Index number. Again I am repeating, right? So I just will again write the numbers 20, 30, 40, 50.2, 60. As these are floating, so I will write 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. And index labels are nursery, then LKG, then HKG, then first, then second. These are the index label. But as we are using numbers, so that means we are working on index numbers, right? The index numbers are 0, 1, 2, 3, 4. Chal. Now first topic is 1 colon 3. That means start from 1. 1 is what index number? 1, 2, but 3 will not include. That I already tell you, the last index number will not be included. It is the most important thing in this, right? So 1 colon through. So 1 colon 2, that means values will be 1 and 2. 1 and 2, that means LKG, HKG, 30 and 40. See, this is how it will be the output. Is that clear? Next is column 3. Column means I have not mentioned the previous value. If I have not mentioned the previous value, that means it will print, it will start with 0. 0, 1, 2. So this is 0, this is 1, this is 2. So nursery, LKG, HKG. See, nursery, LKG, HKG. बात समझ आ गया आपको? 3 column. 3 column means start with 3 and end with the last value. 3 means 0, 1, 2, 3. Last value will be second. So 3 and 4 will be printed. It is misprinted actually. So 3 and 4 will be printed. This will be the out. Hope so you are able to understand. We are slicing the data using index number. हम slice कर रहे हैं using index number. और जब index number से slicing करेंगे तो last value जो है वो आपका last index number will not be included. This is the most important. यहाँ 1 colon 3 है, that means 1 and 2 रहेगा. Column 3 है, that means 0, 1 and 2 because 3 will not be included. 3 है, that means 3 और 4 क्योंकि 4 के बाद हमारे पास कोई value नहीं है. I hope you are able to understand slicing using index number. Up next we are going to slicing using index label. When label is there, that means last index label will be included. याद रखिएगा, last index label will be included. इससे पहले जो हमने किया उसमें क्या था कि last जो index number था वो include नहीं हुआ था. बट अगर आप लेबल की बात करेंगे
the last index label will be included. The most important thing is this. Suppose if I write nursery to HKG, that means nursery, LKG, HKG, the three will be printed. This means 20, 30 and 40. See, this is the output. Column first means start from starting. Nursery, LKG, HKG, first will also be included. 20, 30, 40, 50.2. See, first column, that means start with first and end with the last value, that is first or second, 50.2 and 60.2. So this is how you can access the data using index label. इससे पहले index number का use किया था, now you are using index label. Index label में last value include होना है, it is the important. Is that clear? चलिए, we should move to the next. अच्छा, one more thing I just want to point it out. If anyone has any doubt, आपको लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ डाउट है, तो काइंडली राइट इन द कमेंट दिस पार्ट इज नॉट able, we are not able to understand. So I will explain again in the next video only, right? Again I am repeating, I am going for series indexing or slicing. Before that you should know what is series, how to create series. If you don't know, kindly go through my previous video. Yes. Now the next is print particular value. Till now what we have has been done is we have printed the data of particular index. या तो particular index किया या फिर हमने continuous work किया, that is slicing. But if we want to print a particular data, suppose यहाँ पे मुझे print करना है 1 और 3, 0, 1, 2, 3 and 4. So 1 और 3 LKG और first, right? So what I have write S bracket, then again a bracket. This bracket shows that we are going to print a particular values. अगर आपको particular values sequence में नहीं चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे 1 colon 3, 1 comma 3. दिस इज नॉट कॉलन, कॉमा मींस 1 and थर्ड वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू. तो फर्स्ट वैल्यू इज LKG and third value is first, so it will be printed here. LKG to second, LKG HKG first and LKG to second, I am sorry, LKG comma second. So LKG value will be printed and second value will be printed, that means 30 and 60. See, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट अ पर्टिकुलर वैल्यू. अगर आपको एक वैल्यू प्रिंट करना है तो हमने क्या किया, एस और इंडेक्स नंबर दे दिया. अगर आपको कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रिंट करनी है तो 1 colon 4 इस तरीके से कर दिया. और अगर आपको पर्टिकुलर 2-3 वैल्यूज लेनी है तो एक और ब्रैकेट आप लगाएं. इन दैट ब्रैकेट यू विल राइट 1 colon 4. यहाँ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 1 और 4. यहाँ कौन सी होगी, 1 से लेकर 4 तक, बट 4 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर 3 तक. और यहाँ कौन सी होगी, 1 इंडेक्स नंबर 1. I hope you are able to understand. This is for a value, this is for a sequence, and this is for multiple values. This is what we call slicing or indexing. Indexing और slicing का यहाँ पे ये मतलब है. सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट्स एंड पांडास की हम लोग बात कर रहे हैं. चलिए, we'll move to the next. Yes, next is series operations. सीरीज में ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे. ऑपरेशंस का मतलब अगर मैं ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो हाउ इट विल बी डन. Yes, see, there is a series s equals to 1 2 3. Three values are there, 1 2 3. No index label are there, so that means by default index label are 0 1 2. This is series s. Okay, next series T, the values are 1 2 4. No index number is there, so that means indexes are 0 1 and 2. If I write s plus t means series s और t को हम ऐड कर रहे हैं. When we are going to add, याद रखिएगा, इंडेक्स लेवल अगर मैच हो रहे हैं तो एडिशन होगा, अदरवाइज NaN आने वाला है. ठीक है, इंडेक्स नंबर दोनों के मैच कर रहे हैं, 0 1 2 और 0 1 2. तो दैट मींस 1 विल बी एडेड टू 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4 C, and 3 plus 4 7. Similarly in multiplication, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, and 3 into 4 is 12. This is how you can perform operations on series. अगर आप सीरीज से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो दो सीरीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट द इंडेक्स नंबर शुड बी मैच. अगर इंडेक्स नंबर मैच नहीं हो रहा है तो कोई एडिशन नहीं होगा, वहां पे एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज NaN, दैट इज नॉट अ नंबर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सीरीज. दो सीरीज को आप तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके इंडेक्स सेम है. अगर इंडेक्स सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं है तो इट विल गिव यू NaN. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यस, नेक्स्ट इज पांडास सीरीज हेड फंक्शन. किस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, हेड फंक्शन की. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. Head means it will give you the top values and tail means it will give you the last values. Suppose this is series, values are 1 2 3 4 5
and indexes are A, B, C, D and E. Suppose I get head 3. Head 3 means top 3. Top 3 means 1, 2, 3 will get printed. See, by default head will print. Again I am saying, if I am not giving in number, तो by default value will be 5 value gets printed. By default there will be 5 values get printed. अगर 5 है तो 5 से कम है तो उतनी प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. टेल फंक्शन. टेल फंक्शन क्या करने वाला है? लास्ट 3 वैल्यूज दैट मीन CD, तो CD get printed. That's it. So this is head function and tail function. Yes. Now the next and the most important topic is series attributes. Attributes का मतलब होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर सीरीज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें कुछ वैल्यूज पुट की हैं तो व्हाट दिस मीन. इंडेक्स क्या प्रिंट करने वाला है? इंडेक्स डॉट नेम, वैल्यूज, डी टाइप, शेप, एन बाइट, एंडम, size, has, nones or empty. These all are the called series attributes. These all are called series attributes. I am just going to explain these series attributes through a program only, right? तो एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसमें हम लोग इसको सीरीज एट्रीब्यूट्स को आपको शो करेंगे, राइट? सीरीज एट्रीब्यूट्स के लिए ये हमारा पाइथन है. यस यस, दीज आर द सीरीज एट्रीब्यूट प्रोग्राम एक्चुअली, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट? So first of all, I have created a series. See, import numpy as np. This is pandas as pd, right? Why I have used this numpy? Because one value I have put, that is nan. एक blank value मैंने रखा है, इसलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? nan का यूज करा है, ठीक है? सीरीज क्रिएट किया. वी नो दैट s इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज. डेटा क्या हो गया आपके पास? बेसिकली डेटा इज 20, 30, 40, राइट? When I got the print, सीरीज को जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए सीरीज प्रिंट हो गया. नर्सरी, LKG, HKG, फर्स्ट, सेकंड. यस, ओके. नाउ द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज इंडेक्स. जो हमारा पहला एट्रीब्यूट है वो कौन सा? इंडेक्स. इफ आई राइट प्रिंट s डॉट इंडेक्स, तो s डॉट इंडेक्स से क्या होने वाला बेटा? इट विल गेट प्रिंट ऑल द इंडेक्सेस. सी, कौन कौन से इंडेक्स है मेरे पास? नर्सरी, LKG, HKG, फर्स्ट और सेकंड. तो ऑल इंडेक्स विल प्रिंटेड. दिस इज कॉल्ड index attribute. Okay, one more attribute is, the second attribute is index dot name. What is index dot name? आपके जो indexes हैं, देखिए यहाँ पे indexes कौन से हैं? नर्सरी है, LKG है, HKG है. I hope आप लोग you are able to see. Yes. तो if you want to provide a heading to the index, index को अगर आपको heading देना है, suppose if I write s dot index dot name, see s dot index dot name. अगर मैं लिखता हूँ s dot index dot name और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, तो ये क्या करना है? आपका जो इंडेक्स हैं उनको एक हेडिंग प्रोवाइड कर देगा. सी, किस तरीके से? मैं वापस सीरीज प्रिंट करता हूँ. आप देखिए अभी जो क्लास सीरीज है उसमें जो इंडेक्सेस है उनका नेम क्या आ गया? ऊपर क्या आ गया? हेडिंग आ गया, दैट इज क्लास. तो इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ हेडिंग टू द इंडेक्सेस, it will given by the index dot name property. The first property is index, second property index dot name, third one is values. What is values? As the name suggests, it will print the all the values. जो भी आपकी values होने वाली वो print कर देगा. See, ये सारी values print हो गई 20, 30, 40. Data type is float. इससे पहले जब मैंने इंडेक्स प्रिंट किया था तो उसका डेटा टाइप क्या था? ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सेस थे आपके वो नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी स्ट्रिंग वैल्यूज थी, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया था. अभी वैल्यूज फ्लोट है इसलिए इसका डी टाइप क्या आ गया? आपका फ्लोट आ गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, शेप. यस, शेप बेसिकली क्या करता है? दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो शेप और एक साइज. शेप बताता है आपके पास हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर. सी, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 5 कॉमा 5 कॉमा मींस 5 are the number of columns and there is only one row, right? इसलिए कॉमा के बाद एक ब्लैंक रहता है, बिकॉज जब 2D एरे होता है तो रो और कॉलम को शो करता है, बट ये 1D एरे है तो ओनली 5 कॉमा यही आपका शो होगा, राइट? S डॉट शेप और S डॉट साइज. साइज will show you the number of values. See, number of values are 5. I hope you are able to understand shape and size. Next property is n bytes. Yes, n bytes means number of bytes. अब बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स किस पे वर्क करेगा? सी, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है. ईच फ्लोटिंग वैल्यू हैज 8 बिट 8 बाइट. 1 2 3 4 एंड 5 5 वैल्यूज आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विल बी 40. सी, नंबर ऑफ बाइट्स कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया, राइट? इसके बाद एक होता है s डॉट एंडिम. एंडिम इज नंबर ऑफ डायमेंशन. हमें पता है सीरीज 1 डायमेंशन है तो हमेशा आंसर कितना आना है? 1 ही आना है, बिकॉज सीरीज इज
वन डायमेंशनल ओनली। तो दीज ऑल आर कॉल्ड सीरीज एट्रीब्यूट, सीरीज के एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज करने वाले हैं, राइट। साइज हो गया, हैज नन्स, यस। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रिंट एस डॉट हैज नन्स, ये चेक करेगा कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो ये है सीरीज, इसमें कोई नन वैल्यू है, यस, वन में नल वैल्यू, द आंसर इज ट्रू, सी। And if I write print s dot empty, it will check whether string series has contained empty value or not. मतलब complete empty है या नहीं, because complete empty नहीं है तो I will get the answer that is false। अगर empty series होती तो आंसर मेरे पास क्या आता है, true आ जाए। तो these all are called series attributes। जो series के अभी तक हमने attributes पढ़े हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सीरीज, that we have already discussed, what is series index, what is series slice, how we can access the value using index number, index label, then we have performed the operations हमने perform करे, head function, tail function, then index attributes, these all about today class। ठीक है, मैंने आप लोगों को सीरीज कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी माय डेटा फ्रेम ओनली। अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस, अगर आप लोगों ने इसको पहले नहीं देखा है तो यही सजेशन है, पहले प्रीवियस वीडियो देखें उसके बाद इसे देखें, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो काइंडली if you like this video, kindly like this video, comment if you want any topic video on any topic, right, and subscribe my channel, not just because ki I want to increase my subscription, but also you will get the notification of any new video I have uploaded। I will try my level best to give you whole 12th IP syllabus, right? Even I will soon start 11th IP also, right? 12th IP whole videos I will provide you, and for a specific topic you just write and comment। So all the very best dear students, hope my experience will give you positive energy for this subject। This is the most interesting and most valuable subject actually, right? So thank you so much, all the very best, thank you। Yes, my next video I will upload soon, you will get the notification, that's why I am saying you just subscribe my channel so you get the notification of my next video। We will go through data frame, and yes, one more request was there for CSV file importing, so that I will tell you when data frame is completed, right? Thank you so much, have a nice day।